हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि आपने यूनिट 4 पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको अच्छी तरीके से देखिए। बीकॉम ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हो डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस और एलिमिनेट्स रिस्क इन द फॉलोइंग वेज। कैसे कैसे रिस्क है देखिए। फर्स्ट लिखा हुआ है ईच इन्वेस्टमेंट इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट्स ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ दैट पोर्टफोलियो, thus any risk that increases or reduces the value of that particular investment or group of investments will only have a small impact on the overall portfolio. Second, the effects of firm specific actions on the prices of individual assets in a portfolio can be either positive or negative for each asset for any period. Thus, in large portfolios, it can be reasonably argued that positive and negative factors will average out so as not to affect the overall risk level of the total portfolio. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज पोर्टफोलियो हर बार पूछा जाता है। 2017 में आ चुका है, 2021 में आ चुका है एंड रिसेंटली 2023 में आ चुका है। तो व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो इज द आउटकम ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ इट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन of financial assets that may be stocks, bonds, marketable securities or even cash. First of the individual financial assets in a portfolio have their own risk and return characteristics, but the portfolio of those assets combined will have different risks and return than their individual risks and return. उसके बाद देखते हो क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर अच्छी तरीके से लिखिए। ये 2016 में आ चुका है, 2019 में एंड 2024 में रिसेंटली आया है। व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक्टिविटी involves the construction, maintenance, revision and evaluation of investment in multiple financial assets with the objective of choosing the right type of securities in right proportions so as to maximize returns with least risk. Full stop. A number of portfolios can be constructed out of a given set of securities. Full stop. The portfolios may be held by individual investors, mutual funds, hedge funds, annuity funds and financial institutions. The portfolios of funds and the financial institutions are managed financial managers and experts because of their magnitude. उसके बाद देखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बिगिंस विद प्लानिंग, accumulates into its construction, creation of a portfolio and its continuous monitoring for making adjustments in response to the changes occurring in the assets that constitute the portfolio. First, accordingly, the planning, उसके बाद construction and monitoring are basic steps in the process of portfolio analysis as discussed below. सबसे पहला स्टेप जो है portfolio planning. It is the initial and most important step as it lays down the foundation of the portfolio process and its management. This step consists of the following specific actions. बहुत सारे actions है, देख सकते हो। सबसे पहला देखिए determining the objectives and constraints. To begin with planning, the forecast task is to identify the investment objectives and constraints of the individual entity for whom the portfolio is to be constructed. Number B देखिए investment policy statements IPS. After identifying the objectives and constraints, the next task is to specify the different paths, strategies and methods that need to be employed to achieve these objectives subject to the constraints. उसके बाद नंबर सी एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट. द नेक्स्ट स्टेप इन प्लानिंग फेज इज टू फॉर्म एक्सेप्शंस रिगार्डिंग द सिक्योरिटीज मार्केट टू टारगेट द क्लास ऑफ सिक्योरिटीज व्हिच ऑफर्स हायर रिटर्न विद टॉलरेबल रिस्क एंड आर दोज व्हिच आर लेस रिस्की एंड ऑफर एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिटर्न्स. उसके बाद देख सकते हो सिक्योरिटीज एलोकेशन स्ट्रेटेजी. फाइनली बाय कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्स्टेंट्स, टू टाइप्स ऑफ एलोकेशंस आर प्लान्ड, स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल, डिस्कस्ड एज बिलो. सबसे पहला देखिए स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन. इट इज ए स्पेसिफिक प्लान of action involving synchronization of the investment policy statements with the analysis of securities market to determine the allocation of the security classes considered for investment. Optimal strategic asset allocation depends upon the risk tolerance and return expectations of an investor. दूसरा देख सकते हो tactical asset allocation. A temporary change in an investor's requirement or security market exceptions calls for a short-term change in the portfolio strategy. This type of change is implemented by the tactical asset allocation. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन और भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर जो कि आने वाले समय में आते रहेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को तो बेहतर वीडियो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।